तो पिला माने लास्ट वीडियो रे नंबर 5 रो 7th बिट पर्यंत हमरो फिनिश्ड हे छी। नाउ एबे हम स्टार्ट करिबा से नंबर 5 रो 8 बिट डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट मींस d by dx। तो x क्यूब माइनस 1 रो पावर होल टू द पावर 9 into sec square x। तो क्वेश्चन अछि डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z किछि मेंशन करनी। तो केबे भी किछि मेंशन करना थिबो तो जो गिवन देछि फंक्शन से इन टर्म्स ऑफ x अछि द x रो वेरिएबल अछि तो विथ रिस्पेक्ट टू x रे करिवो। यदि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थिबो थीटा रो वेरिएबल थिबो तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करिवो। यदि z रो एक्सप्रेशन थिबो विथ रिस्पेक्ट टू z करिवो। सिंपल डिफरेंशिएट अछि। हमरो गिवन क्वेश्चन अछि इन टर्म्स ऑफ x अछि x रो एक्सप्रेशन अछि माने d by dx गिवन फंक्शन तुमे ऑलवेज फाइंड करिवो। तो डेरिवेटिव d by dx of x to the power 3 minus 1 whole to the power 9 into sec square x अछि। तो ये मोरो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा तो ऑब्वियसली मो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करिवे। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx of x to the power 3 minus 1 रो 9 into sec square x plus x cube minus 1 whole to the power 9 into d by dx of sec square x। तो equals to derivative of x cube minus 1 to the power 9। तो this is a composite function। यदि composite अछि तो definitely केमती derivative हो ना using chain rule। तो apply करो chain rule। तो 9 into x cube minus 1 whole to the power 8 into d by dx of x cube minus 1 into sec square x plus x cube minus 1 whole to the power 9 sec square x। तो this is also a composite function। तो इटी भी अप्लाई करे चेन रूल अप्लाई कर ले 2 into sec x into d by dx of sec x into sec x d by dx of sec x। तो this equals to 9 into x cube minus 1 whole to the power 8 x cube derivative 3x square 1 derivative 0। तो derivative of x cube minus derivative 1 into sec square x x cube minus 1 whole to the power 9 into 2 sec x। Now sec x derivative direct formula अछि that is sec x into tan x। तो equals to 9 this one is 3x square 9 into 3 27 x square into x cube minus 1 whole to the power 8 into sec square x plus 2 into sec x into sec x। तो 2 into x cube minus 1 whole to the power 9 into sec square x into tan x। now मते कॉमन मिलला x cube minus 1 whole to the power 8 अछि कॉमन sec square अछि कॉमन। तो कॉमन नै छिबा x cube minus 1 whole to the power 8 into sec square x then into 27 x square plus 2 into x cube minus 1 into tan x। बस this equal to answer। बहुत इजी खाली सिंपल अप्लाई कन कली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कली देन चेन रूल अप्लाई करिकी मते इजीली सॉल्यूशंस मिल गला। तो नेक्स्ट बिट ला 9th बिट। तो 9th बिट भी तुम पे इजी अछि। तो d by dx of sin square cos inverse x sin square cos inverse x। तो दिस इक्वल्स टू d by dx of ताकि ठीक है फंक्शन टा में सिंपलीफाई करना बा। तो दिस इक्वल्स टू sin cos inverse x रो होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू d by dx of sin cos inverse x रो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अछि sin इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 minus x square। तो दिस इक्वल्स टू d by dx of sin inverse root over of 1 minus x square अछि। तो using inverse trigonometry property this one the root over of 1 minus x square रो whole square। तो equals to d by dx of 1 minus x square then derivative of 1 minus derivative of x square। तो 1 derivative 0 x square derivative 2x। तो end रे मते मिलला minus 2x। बहुत इजी तुम आराम से करि परिबो किछि डिफिकल्ट नो। तो बस तो तुम्हें चाहिबो
फॉर्मूला न यूज करे सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज न करके भी डेरिवेटिव करियबो बेटर हबो सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिवो सिंपलेस्ट फॉर्म मते मिलला 1 - x² तो एटा डेरिवेटिव को मते इजी हबो जे मु एटी चेन रूल अप्लाई करिवि आंसर तो हे जीवो बट टिके लेंथी हे जीवो तो बेटर हबो सिंप्लिफिकेशन करिवो सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिवो देन डेरिवेटिव करिवो आंसर मिल जीवो -2x। टेंथ bit d by dx of a to the power x into x plus 1 by x whole to the power 10. The derivative of a to the power x into x plus 1 by x whole to the power 10 ये प्रोडक्ट अच्छी तो मतलब डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करियर अच्छी तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो d by dx of a to the power x into x plus 1 by x whole to the power 10 plus a to the power x into d by dx of x plus 1 by x whole to the power 10. The derivative of first function into second function plus first function into derivative second function. The a to the power x derivative a to the power x into ln a into x plus 1 by x whole to the power 10 plus a to the power x. तो x plus 1 by x whole to the power 10 तो this is a composite function तो अप्लाई कौन करिए ना चेन रूल तो 10 into x plus 1 by x whole to the power 9 then d by dx of x plus 1 by x तो equals to a to the power x into ln a into x plus 1 by x whole to the power 10 plus a to the power x into 10 into x plus 1 by x whole to the power 9 तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 और डेरिवेटिव 1 by x ला -1 by x square. Now x plus 1 by x whole to the power 9 both रे कॉमन अछि a to the power x भी कॉमन अछि तो कॉमन नै जीवा a to the power x into x plus 1 by x whole to the power 10 तो कॉमन गले हियर ला ln a plus 10 into a to the power x कॉमन जाय छी एटा 9 अछि कॉमन तो लाइन कॉमन गले a to the power x कॉमन x plus 1 by x whole to the power 9 कॉमन तो ln a into x plus 1 by x plus 10 into 1 minus 1 by x square तो आओ सिंप्लिफिकेशन ले किसी फायदा होनी बस हमें एटी एंड कर दो आंसर तो बहुत इजी खाली सिंपल कौन कली प्रोडक्ट रूल यूज कली एंड चेन रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव में कंप्लीट कली देन 11th bit 11th bit अच्छी d by dx of ln root over of x plus 4 minus 2 divided by root over of x plus 4 plus 2 तो this equal to तो आगे कौन करिवा ना ठीक है लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करिवा तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई कले d by dx of ln root over of x plus 4 minus 2 minus ln root over of x plus 4 plus 2 तो equals to the derivative of first term minus derivative second term तो d by dx of ln root over of x plus 4 minus 2 minus d by dx of ln root over of x plus 4 plus 2 तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ln अछि तो दिस वाला कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करे चेन रूल तो ln रो फॉर्मूला 1 by x तो 1 by root over of x plus 4 minus 2 into d by dx of root over of x plus 4 minus 2 minus derivative this equal to 1 by root over of x plus 4 plus 2 into d by dx of x plus 4 plus 2 तो नेक्स्ट स्टेप रे तो दिस इक्वल्स टू 1 by root over of x plus 4 minus 2 but derivative this one तो या डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव 2 तो या डेरिवेटिव केमती करे ना यूजिंग चेन रूल तो चेन रूल अप्लाई करे रूट x डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x मैं अप्लाई करे 1 by 2 into root over of x plus 4 into a d by dx of x plus 4 but to the constant derivative equal to 0 minus 1 by root over of x plus 4 plus 2 the derivative of root over of x plus 4 1 by
2 into root over of x plus 4 into d by dx of x plus 4 plus 2 the constant, तर derivative equal to 0. So equals to 1 by root over of x plus 4 minus 2, then into 1 by 2 into root over of x plus 4 into derivative of x, 1 derivative 4 0, 1 plus 0 minus 1 by root over of x plus 4 plus 2 into derivative of x plus 4, x derivative 1 plus 0. One by 2 into root over of x plus 4 into x derivative 1 plus 0. So this equals to 1 by root over of x plus 4 minus 2 into 1 by 2 into root over of x plus 4 minus 1 by root over of x plus 4 plus 2 into 1 by 2 into root over of x plus 4. Now both have a common मिलना 1 by 2 root over of x plus 4. तो common नीचे 1 by 2 into root over of x plus 4. तो commonly 1 by root over of x plus 4 minus 2 minus 1 by root over of x plus 4 plus 2. तो equals to 1 by 2 into root over of x plus 4. बस ये हमें LCM यूज करिवा. तो LCM यूज करें root over of x plus 4 minus 2 into root over of x plus 4 plus 2. तो here receive root over of x plus 4 plus 2 minus root over of x plus 4. तो मोटे के स्टेप ओमिट को ची माइनस ऑफ दिस फैक्टर. तो ये माइनस माइनस प्लस 2 है जीवो. तो तुम्हें स्टेप पे चाहे ओमिट करी परियो किसी प्रॉब्लम नहीं. Now root over of x plus 4 cancel है जीवो. तो equals to 1 by 2 into root over of x plus 4 into 2 plus 2 4 असीगलो. तो ये a minus b a plus b अच्छी. तो a square minus b square. तो यार स्क्वायर असीगलो x plus 4 और 2 रा स्क्वायर ला 4. तो ये 4 4 cancel है जीवो. Then to 2 4 ये भी cancel है जीवो. तो end मिलला 2 by x into root over of x plus 4. ठीक है, लेंथी अच्छी बट डिफिकल्ट नो. तो आगे लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करी सिंप्लिफिकेशन करिवो. देन बस सिंपल खाली चेन रूल यूज करी डेरिवेटिव करी तुम्हें कंप्लीट करिवो. देन ला 12th bit which is d by dx of ln 4x square 2x minus 7 रा cube divided by 3x square plus 7 whole to the power 5. तो डेरिवेटिव ऑफ ln. तो इतने बड़ा एक्सप्रेशन अच्छे ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थिले तो बेटर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिवा देन डेरिवेटिव करिवा. तो ln अच्छी तो हमें इजीली लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करि परिवा. तो आगे लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करी सिंप्लिफिकेशन करिवा देन डेरिवेटिव. तो log m by n इक्वल टू log m minus log n. तो ln 4x square into 2x minus 7 whole to the power 3 minus ln 3x square plus 7 whole to the power 5. So this equals to d by dx of ln m into n into p अच्छी. तो this equal to ln 4 कर दो using logarithm property plus ln x square है जीवो plus ln 2x minus 7 रा cube minus log m to the power n अच्छी. तो using logarithm property 5 into ln 3x square plus 7 equals to d by dx of ln 4 plus log m to the power n अच्छी. तो 2 into ln x plus 3 into ln 2x minus 7 minus 5 into ln 3x square plus 7
बस नेक्स्ट स्टेप रे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव सेकंड, डेरिवेटिव थर्ड, डेरिवेटिव फोर्थ. तो डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ ln 4 but 2 into ln x, 2 constant, ln x the variable अछि, तो this equal to 2 into d by dx of ln x. तो इठे मु अप्लाई कोन कली ना d by dx of k into fx, तो आंसर आसीबो k into derivative fx माने 2 into derivative ln x. तो एक्जेक्टली सेम थी, तो 3 into d by dx of ln 2x minus 7 minus 5 into d by dx of ln 3x square plus 7. तो equals to ln 4 the constant, तो derivative equals to 0, constant derivative 0 plus 2 into ln x derivative 1 by x plus 3 into ln 2x minus 7 composite अछि ln derivative then this derivative 1 by 2x minus 7 into d by dx of 2x minus 7 minus 5 into ये भी composite function, तो ln का formula 1 by x square, 1 by x, तो 1 by 3x square plus 7 into d by dx of 3x square plus 7 equals to 2 by x plus 3 by 2x minus 7, derivative of 2x minus 7, 2x derivative 2 into 1, 7 derivative 0, minus 5 into 1 by 3x square plus 7, 3x square derivative 3 into 2x, x square derivative 2x, 3 the constant, then 3 into 2x achi plus 7 derivative 0. So equals to 2 by x plus 3 into 2 6 by 2x minus 7 minus 5 plus 6, 5 into 3 into 2, 5 into 6, 30x divided by 3x square plus 7 la answer. बस आगे सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिबो, सिंपलेस्ट फॉर्म को वंस चेंज हेला देन डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म करिके तुमे आराम से डेरिवेटिव फाइंड करि परिबो. प्रॉब्लम बेसी लेंथी नो, खाली लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करिबो देन सिंपल से चेन रूल यूज करिके तुमे आराम से डेरिवेटिव करि परिबो. Then 13th bit d by dx of 5 to the power ln sin x. तो d by dx of 5 to the power ln sin x, ये तो सिंपल हमको कंपोजिट फंक्शन मिल रहा, तो हम आराम से कौन करें ना चेन रूल यूज करके सॉल्व करी परिबा. तो फर्स्ट a to the power x फार्मूला, a to the power x into ln a, तो 5 to the power ln sin x, a to the power x into ln a equal to here 5 into रहला d by dx of ln sin x equals to 5 to the power ln sin x into ln 5, derivative ln sin x derivative ln derivative 1 by sin x as 0, then d by dx of sin x equals to 5 to the power ln sin x into ln 5 1 by sin x derivative cos x. So this equals to 5 to the power ln sin x into ln 5 or cos by sin equal to cot x. The answer. 14th bit d by dx of root over of sin root x अछि. ते फंक्शन टा कंपोजिट फंक्शन अछि, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ sin root x अछि. तो आगे रूट रा फार्मूला यूज करिवा देन sin रा देन root x रा. तो root x रा डेरिवेटिव 1 by 2 root x 1 by 2 into root over of sin root x into d by dx of sin root x. तो मैं आगे root x रा फार्मूला यूज करछि 1 by 2 root x into derivative sin root x. So this equals to 1 by 2 into root over of sin root x into sin derivative cos root x, then into we see what d by dx of root x. Can sin root x a composition of sin x and root x achi. So this equals to cos root x divided by 2 into root over of sin root x into root x derivative 1 by 2 root x. तो मोते मिला cos root x divided by 2 into 2 4 into root x into root over of sin root x. आंसर बहुत इजी, खाली सिंपल चेन रूल यूज करके तुम्हें आराम से प्रूफ करी परिबो.
then 15th bit, तो 15th bit अच्छी d by dx of x to the power sin x plus tan x whole to the power x, tan x to the power x अच्छी, तो d by dx of x to the power sin x अच्छी plus tan x to the power x अच्छी। तो यार डेरिवेटिव केमती करियो ना, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अच्छी मैंने पक्का हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करे छी, तो तुमे चाहे डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव सेकंड टर्म एमती स्टेप बाय स्टेप करि परिबो। तो मोटे न्यू मेथड हम कहू छी, तो सपोज के तुमको fx मिलला, तो fx इक्वल तुम यूज करि परिबो e टू द पावर ln fx, e टू द पावर ln fx यूज करिवो तो तुमको सिंप्लिफिकेशन टिके हेल्प करिवो, हम यूज करिवो fx इक्वल e टू द पावर ln fx, तो दिस इक्वल्स टू d by dx ऑफ x to the power sin x अच्छी प्लस d by dx of tan x whole to the power x। तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करिके सॉल्व करियर अछि, माने हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी तो यूज करिवा, तो e to the power ln fx, तो दिस इक्वल्स टू d by dx of, तो मु e to the power ln x to the power sin x कर दे छी, यूज करछि प्रॉपर्टी, प्लस d by dx of e to the power ln tan x to the power x, तो इक्वल्स टू d by dx ऑफ e to the power sin x into ln x plus d by dx of e to the power x into ln tan x। तो दिस इक्वल्स टू, तो देन ला d by dx of e to the power x फॉर्म आसी गला, तो ये तो कंपोजिट फंक्शन अछि, तो अप्लाई करे चेन रूल, तो e to the power sin x into ln x into d by dx of sin x into ln x प्लस e to the power x फॉर्म अछि, तो e to the power x फॉर्मूला, तो e to the power x into ln tan x then into d by dx of x into ln tan x। बस मोटी अप्लाई कौन कली ना, चेन रूल अप्लाई करछे, चेन रूल अप्लाई करे, चेन रूल अप्लाई करे, तो e to the power sin ln x, अरे ये एक्सप्रेशन टा में तो एक्चुअली x to the power sin x थेटा यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी मैं फॉर्म को चेंज करतली, तो मुझे बैक करिवि तो मते अगेन यार रिजल्ट मिलिबो x to the power sin x, तो तुम्हें किछि नै खाली कॉपी पेस्ट या प्लस डायरेक्ट यूज कर दो x to the power sin x, देन डेरिवेटिव sin x into ln x, तो ये प्रोडक्ट मिलला, तो हमें अप्लाई करे प्रोडक्ट रूल, तो अप्लाई करे d by dx of sin x into ln x plus sin x into d by dx of ln x प्लस, तो यार एक्सप्रेशन मो tan x to the power x ही आस्तिला, तो दिस वन तुम्हें डायरेक्ट यूज कर दो tan x to the power x, देन अप्लाई के लिए प्रोडक्ट अच्छी, तो अप्लाई के लिए प्रोडक्ट रूल, तो d by dx of x into ln tan x plus x into d by dx of ln tan x, तो इक्वल्स टू x to the power sin x into sin x डेरिवेटिव फॉर्मूला cos x into ln x plus sin x, ln x डेरिवेटिव फॉर्मूला 1 by x plus tan x to the power x, x डेरिवेटिव 1 into ln tan x plus x into ln tan x कंपोजिट फंक्शन अप्लाई कली 1 by tan x, तो ठीक स्टेप ओमिट करछि, tan x ln tan x डेरिवेटिव 1 by tan x आसीबो, देन डेरिवेटिव tan x डेरिवेटिव इक्वल टू sec square x, तो मटे सॉल्व केमति करछि ना यूजिंग चेन रूल 1 by tan x देन tan x डेरिवेटिव sec square x, तो इक्वल्स टू x to the power sin x into cos x into ln x plus sin x divided by x plus tan x whole to the power x into ln tan x plus x by x into sec square x divided by tan x, आंसर। तो तुम चाहे बटे सिंप्लिफिकेशन करि परिबो, अदरवाइज तुम एठी भी एंड करि परिबो आंसर आंसर।
16th bit d by dx e to the power x. तो क्लियरली दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. यदि कंपोजिट फंक्शन अच्छी तो हमें अप्लाई कौन करियो ना चेन रूल. तो चेन रूल अप्लाई करे ये e to the power x. ये एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ e to the power x एंड अच्छी e to the power x. तो मैं आगे अप्लाई करी e to the power x फार्मूला. तो e to the power x is equal then d by dx e to the power x. तो equals to e to the power x is equal then derivative e to the power x is e to the power x. बस हे गला आंसर. बहुत इजी. खाली चेन रूल अप्लाई करी तो मैं आराम से सॉल्व करी करीबा. देन 17 बिट d by dx x to the power root x. तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अच्छी तो मते डेफिनेटली यूज करे छे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो यूज करे लॉगरिथम प्रॉपर्टी. तो x to the power root x equal to e to the power ln x to the power root x यूज कर दो. तो ये लॉगरिथम प्रॉपर्टी. तो d by dx e to the power ln x to the power root x using logarithm property n log m माने root x into ln x. then composite को चेंज करेगा तो using chain rule e to the power root x into ln x then d by dx root x into ln x equals to e to the power root x into ln x into तो root x into ln x ये है multiplication of two expressions अच्छी. तो using product rule d by dx of root x into ln x plus root x into d by dx of ln x. तो ये एक्सप्रेशन टा हमारा x to the power root x प्लस थिला. तो ये आपने से डायरेक्ट कौन करियो ना x to the power root x कर दबा. then root x डेरिवेटिव फार्मूला यूज करिबा 1 by 2 root x into ln x plus root x और ln x डेरिवेटिव 1 by x और this equals to x to the power root x into 1 by 2 root x into ln x plus 1 by root x. तो ठीक है सिंप्लिफिकेशन भी तुम्हें करी परिबो. तो 1 by root x तुम्हारा कॉमन अछि तो 1 by root x कॉमन नै जीवो तो 1 x to the power root x divided by root x into asibo ln x divided by 2 plus 1 equals to x to the power root x divided by root x will half into ln x plus 1. So this equals to x to the power root x divided by root x ln x to the power half plus 1 equal to ln e or this equals to x to the power root x into ln this one the root x plus ln e or divided by root x or this equals to x to the power root x this one the ln root x into e divided by root x. The answer 18th bit d by dx of sec inverse e to the power x plus x. ये तो सिंपल चेन रूल अच्छी तो तुम्हें आराम से करना चेन रूल यूज करके सॉल्व करियो. तो सेक इनवर्स डेरिवेटिव फार्मूला 1 by x into root over of x square minus 1 but mod x है तो 1 by mod x e to the power x plus x into root over of x square तो e to the power x plus x रो whole square minus 1. तो मैं अप्लाई करछि sec inverse x रो डेरिवेटिव फार्मूला 1 by x into root over of x square minus 1 into d by dx e to the power x plus 1 plus x. So this equals to 1 by mod e to the power x plus x into root over of e to the power x plus x रो whole square minus 1 then derivative of e to the power x e to the power x रो e to the power x derivative 1. तो मते एंड रे मिलला e to the power x plus 1 divided by mod e to the power x plus x into root over of e to the power x plus x रो whole square minus 1. आंसर बहुत इजी खाली सिंपल चेन रूल यूज करके तुम्हें आराम से सॉल्व करी परिबो. देन 19th बिट d by dx of ln cos e to the power x. तो ये फंक्शन भी सिंपल कंपोजिट अच्छी तुम आराम से चेन रूल यूज करके सॉल्व करियो.
तो आगे ln then cos then e to the power x, ln रो 1 by x तो 1 by cos e to the power x, then d by dx of cos e to the power x equals to 1 by cos e to the power x, cos derivative minus sin e to the power x into d by dx of e to the power x equals to minus sin by cos tan e to the power x, e to the power x रो e to the power x, तो minus e to the power x into tan e to the power x आंसर। इजी खाली सिंपल चेन रूल यूज करके तुम आराम से सॉल्व करि परिबो। देन 20 नंबर d by dx of a to the power sin inverse x square, तो ये भी सिंपल कंपोजिट अच्छी, तो तुम्हें चेन रूल ही सॉल्व करिवो। ताकि a to the power x रो फार्मूला a to the power x into ln a, तो a to the power sin inverse x square into ln a into d by dx of sin inverse x square, तो डेरिवेटिव ऑफ a to the power x फार्मूला a to the power x into ln a into d by dx of sin inverse x square, तो a to the power sin inverse x square into ln a डेरिवेटिव sin inverse, तो 1 by root over of 1 minus x square, तो x square square into d by dx of x square equals to ln a into a to the power sin inverse x square into x square derivative 2x, तो ये तो 1 by root over of 1 minus x to the power 4 x square derivative 2x, तो equals to 2x into ln a into a to the power sin inverse x square और divided by root over of 1 minus x to the power 4 ला आंसर। बहुत इजी, तो तुम एटा नीचे आराम से करि परिबो, किछि प्रॉब्लम नहीं। तो 2x into ln a into a to the power sin inverse x square divided by 1 minus x to the power 4। Then 21, which is d by dx of cos inverse x to the power 4 minus 1 divided by x to the power 4 plus 1। तो ये इक्वेशन तुम्हें डायरेक्ट चेन रूल भी यूज करि परिबो, बट याको टिके कोन करना कि सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करे देन डेरिवेटिव करे सेटा बेटर हबो। तो यदि सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज हे परथिबो, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिवो देन डेरिवेटिव कले सेटा बेटर हबो। तो cos इनवर्स x to the power 4 कॉमन अछि, तो 1 minus 1 by x to the power 4 वो कॉमन नहीं x to the power 4, तो x to the power 4 कॉमन ले फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 plus 1 by x to the power 4, x to the power 4 कैंसिल हो जीवो, d by dx of cos inverse, तो 1 minus 1 by x to the power 4 अछि, मु 1 by x square रो स्क्वायर कले कोन पय कुछ तुमे टिके परिबे आराम से बुझ परिबो। तो 1 plus 1 by x square रो स्क्वायर, तो 1 minus x square by 1 plus x square फॉर्म अछि, तो ए फॉर्म रे थिबो देन तुमे सब्स्टिट्यूट करिवो 1 by x square equal to tan theta, tan theta, तो this implies theta equal to tan inverse 1 by x square, tan inverse 1 by x square, तो this equals to d by dx of cos inverse 1 minus tan theta रो स्क्वायर, tan square theta divided by 1 plus tan theta रो स्क्वायर, tan square theta equals to d by dx of cos inverse, this वाला cos 2 theta रो फॉर्मूला, तो यूज कर लिए cos 2 theta, तो this equals to d by dx of, तो यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी देखो सिंप्लिफिकेशन कले मते 2 थीटा मिलिबो, 2 तो कांस्टेंट 2 into d by dx of थीटा, बट थीटा इक्वल हमर छै tan इनवर्स 1 by x स्क्वायर, तो यूज कर दिबा, तो d by dx of tan इनवर्स 1 by x स्क्वायर, तो tan इनवर्स 1 by x स्क्वायर ला यार सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गला ना। अब डेरिवेटिव करिवा, सिंपल चेन रूल अप्लाई करिवा, तो tan इनवर्स रो फार्मूला 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो 1 by 1 plus 1 by x square रो स्क्वायर into d by dx of 1 by x square, तो equals to 2 into 1 by 1 plus 1 by x to the power 4 और 1 by x square डेरिवेटिव minus 2 by x cube,
तो तुम्हें चेन रूल यूज करि परियो कोसेंट रूल यूज करि परियो तो x टू द पावर -2 कर दो -2 x टू द पावर -3 तो -2 by x क्यूब तो दिस इक्वल्स टू 2 into LCM x to the power 4 अछि x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 रेसिप्रोकल कले x to the power 4 डिवाइड by x to the power 4 plus 1 तो एति की स्टेप तुमे ओमिट करे प्रैक्टिस भी करियो नले बेसी लेंथ दे जीवो -2 by x to the power 3 तो सिंप्लिफिकेशन कले x क्यूब तो कैंसिल हो जीवो तो ये कैंसिल हो जीवो तो एटी मते 1 मिलला तो -4x डिवाइड by x to the power 4 plus 1 -4x divided by x to the power 4 plus 1 ला आंसर बहुत इजी बट ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म करी कले तो तुम पे हेल्प करिवो और तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव करियो ठीक है तुम पे प्रॉब्लम क्रिएट करियो बेटर हबो सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करियो देन डेरिवेटिव d by dx of x to the power e whole to the power e to the power x plus e to the power x whole to the power x to the power e x to the power e e to the power x e to the power x x to the power e so this equals to d by dx of x to the power e e to the power x plus d by dx of e to the power x whole to the power x to the power e तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अछि तो डेफिनेटली हमें यूज करियो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करियो तो हम यूज करली लॉगरिथम प्रॉपर्टी e to the power ln x to the power e e to the power x plus d by dx of e to the power ln e to the power x whole to the power x to the power e तो अगेन हम यूज करें लॉगरिथम प्रॉपर्टी log m to the power n अछि तो n log m तो e to the power e to the power x into ln x to the power e plus d by dx of e to the power x to the power e into ln e to the power x तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज कछि log m to the power n तो दिस इक्वल्स टू d by dx of e to the power x ln x to the power e तो अगेन मैं यूज करि परिबे log m to the power n तो यूज करले e to the e into ln x plus d by dx of e to the power x to the power e अछि तो अगेन मैं यूज करि प्रॉपर्टी तो दिस वाला x into ln e तो दिस इक्वल्स टू d by dx of e to the power x plus 1 है जीवो into ln x plus d by dx of e to the power x to the power e अछि into x ln e टा 1 है जीवो ln e value equal to 1 ना मतबे मिलला कंपोजिट फंक्शन तुम अप्लाई कोन करिवे ना डेफिनेटली चेन रूल अप्लाई करिवे तो e to the power x plus 1 into ln x into d by dx of e to the power x plus 1 into ln x plus e to the power x to the power e into x into d by dx of x to the power e into x ये तो 1 अछि into 1 ले x जीवो तो ये एक्सप्रेशन टा मु कोठो आस्तिला ना x to the power e to the power x बस ता प्लेस रे यूज कर देली x to the power e to the power x तो एटी मते मिलला प्रोडक्ट रूल तो प्रोडक्ट मिले मु अप्लाई कोन करिवे सेम थी अप्लाई करी प्रोडक्ट रूल तो यूज करले e to the power x plus 1 तो d by dx of e to the power x plus 1 into ln x plus e to the power x plus 1 into d by dx of ln x plus e to the power ये एक्सप्रेशन टा हमरो e to the power x to the power e रो ही आसीला तो या प्लस हम डायरेक्ट करि दो e to the power x whole to the power x to the power e then into प्रोडक्ट मिला e to the power x in e to x to the power e into x अछि तो ये प्रोडक्ट अछि तो प्रोडक्ट ला अप्लाई करें तो d by dx of x to the power e into x plus x to the power e into d by dx of x तो this equals to
x to the power e to the power x, e to the power x plus 1 derivative ये भी composite है e to the power x plus 1 into x plus 1 derivative 1 plus 0 into ln x plus e to the power x plus 1 into ln x derivative 1 by x plus e to the power x whole to the power x to the power e, then into d by dx of x to the power e. X to the power e तो constant अच्छी तो apply x to the power n formula. तो e into x to the power e minus 1 into x plus x to the power e into x derivative 1. तो equals to x to the power e to the power x, e to the power x plus 1 into ln x plus e to the power x plus 1 into 1 by x plus x to the e to the power x whole to the power x to the power e. So e to the power e into x to the power e minus 1 into x plus e to the power x to the power e. So equals to x to the power e to the power x into e to the power x plus 1 तुम्हारा कॉमन अच्छी तो कॉमन नहीं जो e to the power x plus 1 into मिडला ln x plus 1 by x. Then second term अच्छी e to the power x to the power e into e to the power तो into e to the x to the power e minus 1 x to the power 1 तो प्रोडक्ट होगा पावर ऐड है जीवो तो ऐड ले x to the power e s जीवो plus x to the power e. तो एंड रे और तो स्पेस होनी तो बस खाली x to the power e टा कॉमन नहीं जीवो तो सेठी तुम्हें आंसर एंड करिवो. तो तुमरो x to the power e to the power x e to the power x plus 1 into ln x plus 1 by x plus e to the power x to the power x to the power e common नहीं जीवो this one ला e plus 1 बस इला आंसर. बहुत ठीक है लेंथी अच्छी बट डिफिकल्ट नो यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी आगे सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज करिवा देन सिंपल चेन रूल यूज करिकी प्रोडक्ट रूल यूज करिकी तुम्हें डिफरेंशिएशन करिवा और सिंपलीफिकेशन करले आंसर तुम्हारा 8 ही एंड होगा. 23 बिट d by dx of x to the power x. To find the derivative of d by dx of x to the power x, then definitely use a logarithmic differentiation. Let y equal to x to the power x. So take logarithm ln y equal to ln x to the power x. Implies that ln y equals to using logarithm property x to the power x into ln x. Now again देखिए तुम्हारा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल x टू द पावर x अच्छी तो सिंपलेस्ट फॉर्म को चेंज केम देखिए ना सेकंड टाइम टेक लॉगरिथम तो ln of ln y equals to ln of x to the power x into ln x. So this implies ln y equals to ln x to the power x plus ln of ln x. तो ln of ln y equals to x into ln x तो again मैं यूज करूँ logarithm property log m to the power n ln of ln x. Now it is the simplest form. Then differentiate both sides with respect to x. The d by dx of ln y equals to d by dx of x into ln x plus ln of ln x. So ln of ln y derivative first ln derivative 1 by ln y then d by dx of ln y use करके chain rule. तो derivative first term derivative second term d by dx of x into ln x plus d by dx of ln x. So implies that 1 by ln y derivative with respect to x अच्छी तो 1 by y into dy by dx equals to तो x into ln x ये multiplication अच्छी ना तो apply कौन करिवा ना product rule तो derivative of d by dx of x
into ln x plus x into d by dx of ln x plus ln of ln x. Composite function is apply chain rule. 1 by ln x into d by dx of ln x. So implies that 1 by y into ln y into dy by dx equals to x derivative 1 into ln x plus x into ln x derivative 1 by x plus 1 by ln x into ln x derivative 1 by x. Then required dy by dx, so multiply or cross multiplication. So implies that dy by dx equal to y into ln y ln x plus 1 by ln x into x. But our required dy by dx, so y equal to x to the power x to the power x, तो x to the power x यूज करिए. ln y अच्छी x to the power x into ln x, x to the power x into ln x, then into ln x अच्छी plus 1 equal to में यूज करी परिवा ln e plus 1 by x into ln x. So equals to x to the power x into x to the power x into ln x into e plus 1 by x into ln x. Then 24th bit, d by dx of x plus 1 whole square into root over of x minus 1 divided by x square plus 3 whole to the power 3 into 3 to the power x. So given function actually multiplication division of several function अच्छी, तो ये भी हमें definitely apply करेगा logarithmic differentiation. Let y equal to x plus 1 square into root over of x minus 1 divided by x square plus 3 whole to the power 3 into 3 to the power x. So take logarithm. So ln y equals to ln x plus 1 square into root over of x minus 1 divided by x square plus 3 cube into 3 to the power x. So this equals to ln x plus 1 square into root over of x minus 1 minus ln x square plus 3 whole to the power 3 into 3 to the power x. The log m by n equal to log m minus log n. Log m into n अच्छी, तो apply log m plus log n property. तो x plus 1 square plus ln root over of x minus 1 minus ln x square plus 3 cube then plus ln 3 to the power x. तो equals to, तो इसी पे हमें अप्लाई करिए लॉगरिथम प्रॉपर्टी log m to the power n. तो 2 into ln x plus 1 plus ये whole to the power half अच्छी, तो half into ln x minus 1 minus 33 अच्छी, तो 3 into ln x square plus 3 minus plus minus ln 3 to the power x अच्छी, अप्लाई करिए log m to the power n प्रॉपर्टी x into ln 3. Now simplest form का सीखना, then differentiate both sides with respect to x. So d by dx of ln y equals to d by dx of 2 into ln x plus 1 plus half into ln x minus 1 minus 3 into ln x square plus 3 minus x into ln 3. ln y derivative with respect to x, 1 by y into dy by dx equals to the derivative of each term, but two constant अच्छी, तो 2 into d by dx of ln x plus 1. So here half into d by dx of ln x minus 1 minus 3 into d by dx of ln x square plus 3 minus ln 3 constant d by dx of x.
equals to 2 into ln x plus 1 composite function. तो अप्लाई कौन करियो ना चेन रूल. तो 1 by x plus 1 then x plus 1 derivative 1 plus 0 x derivative 1 1 derivative 0. ମୁଁ ଟିକେ step omit କରିଛି. ln x plus 1 derivative 1 by x plus 1 then x plus 1 derivative 1 plus 0. तो 1 by तो भी अप्लाई करो चेन रूल ln x minus 1 तो 1 by x minus 1 और x minus 1 derivative 1 minus 0 minus 3 into अप्लाई करिए चेन रूल 1 by x square plus 3 into x square derivative 2x plus 0 minus ln 3 into x derivative 1. तो एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड अच्छे dy by dx. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो y into 2 by x plus 1 plus half 1 by 2 into x minus 1 minus 3 into 2 6x by x square plus 3 minus ln 3. बट y रे तो एंड करी परिबनी तो y इक्वल टू यूज कर दबा y इक्वल टू यूज कर लिए x plus 1 रो होल स्क्वायर into root over of x minus 1 divided by x square plus 3 रो cube into 3 to the power x. Then whole into 2 by x minus 1 x plus 1 plus 1 by 2 into x minus 1 minus 6x by x square plus 3 minus ln 3. The answer 25th d by dx of 5 into ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power 2 by 3. तो ये सिंपल चेन रूल हमें सॉल्व कर दो ये सॉल्यूशन है जीवो. तो अप्लाई कर लिए चेन रूल 2 by 3 whole into 5 ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power 2 by 3 minus 1 into d by dx of 5 into ln x cube plus 1 minus x to the power 4 equals to 2 by 3 5 into ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power 2 by 3 minus 1 2 minus 3 minus 1 by 3 into derivative first term plus derivative second term. But 5 constant है तो 5 into d by dx of ln x cube plus 1 minus d by dx of x to the power 4. So equals to 2 by 3 5 into ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power minus 1 by 3 then 5 into derivative of ln x cube plus 1 so 1 by x cube plus 1 then derivative x cube plus derivative 1 x cube derivative 3x square 1 derivative 0. तो मुझे चेन रूल यूज करछी minus 4 into x cube. So this equals to 2 by 3 whole into 5 ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power minus 1 by 3 5 into 3 15 x square divided by x to the power 3 plus 1 minus 4 x cube. Or this equals to 2 by 3 whole into 5 ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power minus 1 by 3. तो ये कौन करियो ना LCM नहीं जीवा तो x to the power 3 plus 1 तो ये 15x square minus 4x cube into x to the power 3 plus 1. तो this equals to 2 by 3 whole into 5 ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power minus 1 by 3 not x square common है तो x square common नहीं जीवो into 15 minus 4x into x cube plus 1 divided by x cube plus 1 2 by 3 whole into 5 ln x cube plus 1 minus x to the power 4 whole to the power minus 1 by 3 so x square into 15 minus 4x to the power 4 minus 4x
divided by x to the power 3 plus 1 the answer इजी बस खाली सिंपल चेन रूल यूज करके तुम्हें आराम से सॉल्व करि परिबा 26 बिट d by dx of log sin x base 10 अच्छी plus log 10 base x अच्छी और जो कंडीशन दी 0 लेस देन x लेस देन पाई तो गिवन कंडीशन दी बस हमको डिफरेंशिएट करियर अच्छी तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म बट यार तो डेरिवेटिव हम यूज कर दो d by dx ऑफ log x base a रो फार्मूला बट यहाँ पे हमारो किसी फार्मूला नहीं तो तुम्हें करने जो 10 और x अच्छी तो तुम्हें बेस टाक तुमको चेंज करे अच्छी तो बेस टा x थी वो तो डेरिवेटिव फार्मूला नहीं तो यार चेंज केमती करियो बेस ना यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो नेक्स्ट स्टेप रे तुम्हें कौन करियो ना d by dx ऑफ log sin x base 10 कर दबा प्लस 1 by log x base 10 तो एमती कले करना तुमरो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई हैला तुमरो बेस टा कांस्टेंट हे गेला 80x अछि नाउ तुमरो d by dx ऑफ log x base a रो फार्मूला इजीली अप्लाई हे परिबो देन कोन करिबा ना डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म log sin x base 10 plus d by dx of 1 by log x base 10 तो equals to तो अप्लाई के लिए log x base 10 का फॉर्मूला तो डेरिवेटिव ऑफ log x base a तो d by dx of log x base a तो यार फॉर्मूला 1 by x into ln a 1 by x into ln a तो 1 by x माने 1 by sin x into ln 10 है जीवा then d by dx of sin x तो तुम्हारा चेन रूल अप्लाई हो छी तो 1 by sin x into ln 10 माने 1 by x into ln a then डेरिवेटिव sin x प्लस तो एठी हमें कोन करियो ना चेन रूल भी यूज करि परिबा चाहे तुमे कोसेंट रूल भी करि परिबो यदि कोसेंट रूल करिवो तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 into log x मो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करी minus 1 into log x base 10 रो 1 by x into ln 10 तो ln 10 माने log 10 base e divided by log x base 10 रो whole square तो equals to 1 by sin x into log 10 तुम्हें ln 10 टाको log 10 भी यूज करि परिबा base e sin x डेरिवेटिव cos x plus ये तो 0 इला minus 1 by x into log 10 भी यूज करले किसी प्रॉब्लम नहीं ln 10 log 10 दीटा सेम एक्सप्रेशन divided by log x base 10 रो whole square और this equal to cos by sin अच्छी तो this one like cot x into 1 by log 10 base e plus minus 1 by x into log 10 into log x base 10 रो whole square और this equal to cot x using change of base property this one like log e base 10 minus 1 by x अच्छी into log x base 10 रो स्क्वायर अच्छी जो 1 by log 10 अच्छी तो this equal to तुम्हें log e not house it denominator है into log 10 this one like base e equals to cot x into log e base 10 minus 1 by x into जो log x base 10 अच्छी तो तुम्हें ताको केमती चेंज करियो ना log x base e कर दो डिवाइड बाय log x base log 10 base e तो ये भी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो इनटू log 10 base e तो स्क्वायर अच्छी तो इक्वल्स टू cot x into log e base 10 minus 1 by x into log x base e रो स्क्वायर divided by log 10 base e रो स्क्वायर अच्छी into log 10 base e तो एक्सप्रेशन गोटे कैंसिल है जीवो तो this equals to cot x into log e base 10 minus the reciprocal log 10 base e divided by x into
log x base e रो होल स्क्वायर ल आंसर